तो अभी ऐसी आदरणीय गुलजार दादी के लिए हृदय उद्गार हम सुनने जा रहे हैं आदरणीय भ्राता निर्वैर जी के। Now we will listen from Brother Nirwair. ओम शांति। परम प्रिय, Supremely beloved, परम पिता, Supreme Soul, शिव परमात्मा God Shiva, और उनके साकार माध्यम and his corporeal medium, बाबा के अति लाडले Prajapita Brahma's प्यारे very beloved, extremely sweet, कोने कोने में तथा विदेश के कोने कोने में from the corner of Bharat विराजमान and from the corner परिवार of abroad, all the godly family, और भाइयों to all the brothers and sisters. आज Today, नमस्कार कहें, ओम शांति कहें। can be said Namaskar, Om Shanti. आज का ये जो मिलन है, Today's meeting ये विशेष is special. हमारी परम आदरणीय दादी गुलजार जी, जिनका ऑफिशियल नाम Our Dadi Gulzar, हृदय मोहिनी था। her official name was Hriday Mohini. गुलजार दादी जी का स्मृति दिवस The day of remembrance of Dadi Gulzar ji, मनाएंगे या ऑब्जर्व करेंगे। we will celebrate or observe the day of the remembrance of दादी जी को Dadi 1959 में in 1959 दिल्ली में in Delhi कमला नगर सेंटर पर on Kamla Nagar Center. मिलने गया था I had went to meet और वहाँ पर and at that time दादी जी भी थे Dadi was there, और ब्रदर जगदीश चंद्र जी भी थे। Brother Jagdish Chandra was also there, उसके बाद and after that दादी जी का पाठ लखनऊ में था। Dadi part was in Lucknow. कुछ समय तो हम मिल नहीं पाए थे, For some time I couldn't meet, लेकिन अधिकतर but mostly जब से ब्रह्मा बाबा ने अपनी यात्रा पूरी की, Brahma Baba completed his journey, अपने संपूर्णता को पहुंच गए। attained his completion. उनके अव्यक्त होने के बाद After he became Avyakt, दादी गुलजार जी का ऑफिशियल संदेशी का पाठ शुरू हुआ। the part of Dadi Gulzar's official trance message began. दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी Dadi Prakashmani, तथा अन्य Didi Manmohini, and the other Dadis, गुलजार दादी जी से रिक्वेस्ट किया everyone requested Dadi Gulzar मधुबन में रह करके that while being in Madhuban, बाबा की क्या कहें, बाबा का रथ बनकर रहे have to remain as a Baba's chariot. और दादी गुलजार And Dadi Gulzar, विनम्रता पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया accepted it, और जब जब दादी प्रकाशमणि and whenever को बुलाती रही, Dadi Prakashmani called Dadi Gulzar, मधुबन में वो सेवा करती रही। Dadi continued to do service in Madhuban. दादी
गुलजार जी को 1988 में In 1988, स्वास्थ्य लाभ के कारण बॉम्बे में अस्पताल में रहना पड़ा। Dadi Gulzar had to stay in Bombay Hospital, और बाद में अमेरिका तक जाना पड़ा था। and Dadi need to go to America. तब से मेरा दादी से मिलना ज़्यादा From then on, होने लगा I started meeting Dadi, और भिन्न भिन्न समय पर and at different intervals. दिल्ली के बड़े प्रोग्राम थे, There was the big program in Delhi. समय भी उनसे मिलना होता था। Even at that time, I got the chance to meet मधुबन में Dadi. बाबा के मिलन के प्रोग्राम्स And in Madhuban, से मिलना होता था। there was a meeting program. So I also met Dadi at that time. कि दादी गुलजार जब उनका स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, When Dadi's health condition was a little up and down, तारा बहन Sister Neelu, Sister Tara, और भ्राता गोपाल जी, and Brother Gopal, ब्रिजमोहन जी, Brother Brijmohan, आशा दीदी, Sister Asha, आप सभी ने everybody, उनके साथ में पांडव भवन में जो बहनें रहती and the sisters who stay in Pandav Bhavan, सभी ने बड़ा ध्यान रखा। everybody took great care of Dadi. बीच में कुछ ऐसा समय भी आ गया था And amidst us, there was such a time जो दादी जी को कुछ समय के लिए for some time अहमदाबाद में स्टर्लिंग हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। Dadi needed to stay in the Sterling Hospital in Ahmedabad. मैं उनके पास था And at that time, I was with Dadi. और मिलना अधिक होता था। इतने तक And I used to meet Dadi the most. कि दादी गुलजार अहमदाबाद में उनसे मैं छुट्टी लेकर बाबा का I प्रोग्राम took a leave from Dadi Gulzar in Ahmedabad, उसके लिए आता। and I would come to Madhuban for Baba's program. दादी कहती शाम तक वापस आ जाना। And then Dadi used to tell me that you have to come back by evening. पुरुषार्थ करता था So I was making effort, और बाबा ने शक्ति भी दी थी and Baba gave me power मधुबन में आऊं, that I come to Madhuban. से मिलूं, I meet everyone in the gathering, थोड़ा आराम करके and after taking meals, वापस having little rest, लोटस अहमदाबाद में जाकर I would return to दादी के पास Lotus in Ahmedabad बैठते थे and would sit with Dadi. और अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि लोटस में होती थी। And there used to be a Vyag Babdada's meeting in Lotus House, यहाँ पर मधुबन में दिखाई जाती। and that video used to be shown in Madhuban. दादी जी का यूँ कहें कि ये जो लंबा सफ़र उसमें उन्होंने एक
ऐसा एग्जाम्पल सेट किया Gulzar Dadi in her long journey कि मनुष्य आत्मा को set an example सदा ही that human beings should always stay किसी positive, की नेगेटिव बातों को ना देखना, shouldn't look at the negativities अगर of किसी की others. कोई बात हो भी तो उसमें ये If देखना there is any negativity, उसमें पॉजिटिव क्या है। have to see what positivity is in that. ऐसी बातें दादी की हमने अंत तक देखी। So I saw Dadi in this way until the end. जब दादी ने अपनी संपूर्ण स्टेज प्राप्त की, And when Dadi attained her अव्यक्त हुई, stage of completeness, उनके डॉक्टर्स भी आए, her doctors और also भाई came. बहनें भी बहुत आए, Many other brothers and sisters also came. कोरोना काल था, And at that time it was the किसी Corona किसी को period. कोरोना का असर भी हो गया। And some used to be affected by that दादी Corona को वो period. कोरोना नहीं हुआ, Dadi didn't had Corona. अपना लंबा सफर पूरा करके Dadi completed her long journey. बॉम्बे में गामदेवी सेंटर के बहनों के कनेक्शन से वहीं थी, And पास में lived in Gamdevi Center in connection with the sisters there. वहाँ से And there was coming and going then. संपूर्ण स्टेज प्राप्त करके And attained the complete stage there. अव्यक्त हो गई। And Dadi became avyakt. अव्यक्त होने के बाद And after becoming avyakt, जरूर बहुत से भाई बहनों को संकल्प चलता था, many brothers and sisters would have a thought, देखा गया कि दादी के अव्यक्त होने के बाद but it was seen after Dadi became avyakt, संदेशी के रूप में बाबा के माध्यम के लिए as a trans अपने आप को messenger. अर्पित किया हुआ था। Dadi surrendered herself as Baba's medium. 48 years उन्होंने ये सेवा दी। And Dadi gave service for जब 48 years. उनकी तबीयत ऊपर नीचे हुई थी, And when there was लेकिन बाबा की fluctuations in her health, बाबा की with गाइडेंस Baba's cooperation और and Baba's guidance, नीलू बहन और गोपाल भाई, the instrument souls, Sister Neelu, बहन, Brother Gopal, वहाँ Sister Thara, Gamdevi Center sisters, and everyone. दादी की बहुत प्यार से संभाल की। They took care of Dadi very well. और ऐसा ही कहें कि दादी फरिश्ता के स्वरूप में उड़कर बाबा के Dadi became an angel and reached Baba's subtle world. हम सब उनको याद करते हैं, We all do remember her. उनसे बहुत सबका प्यार है। Everybody has extreme love for Dadi. ये जानते हैं कि दादी हम सब की प्यारी थी, And everybody knows प्यारी रहेगी। that Dadi was very loving. ईश्वरी परिवार में एक ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया, And in the godly family, बचपन से लेकर के she set an example और since her childhood होने तक
until she became Avyakt. सतो प्रधान जीवन क्या होती है, She taught everyone what is Satopradhan life. उसके साथ साथ And along with that, ये भी कहेंगे कि जिसको भी मिली दादी whomever Dadi प्यार met से, with lot of love, मुस्कान से with a smile, और शुभ महावाक्यों से and with an elevated version, कोई न कोई वरदान दिया। she gave blessing तो to ऐसी anyone who वरदानी came दादी to meet her. और ऐसी महान आत्मा Such was Dadi, a great personality, a great soul. दिल से याद करते हैं। We from our heart remember her, होती है दादी के पास ही बैठे रहे। and we feel like sitting with Dadi. बाबा के साथ साथ, साकार बाबा के साथ साथ दादी जी को भी साथ साथ Along with Brahma Baba, we see Dadi, ये अनुभव किया था। and I had experienced this many a times. द्वारा भोग स्वीकार होता था, And when through Dadi Gulzar, the Bhog was फिर उसके बाद अव्यक्त वाणी चलती थी। offered, and the Avyakt version would be spoken. सामने बैठा है, It is as though Baba is sitting in the front. It is not Dadi Gulzar. ब्रह्मा बाबा का चेहरा उसमें आता है। Brahma Baba's face would be visible बाबा के in Dadi's face, पधरामणि पर वो महसूस था। and we would get that realization. उसका एक ही कारण था, The reason for that was only one. इस तरह का अपनी धारणा का स्वरूप रखा Dadi became the embodiment of जो inculcation. बाबा ने उनको अपना रथ बनाया, Baba made अपने संग संग रखा, her as his chariot, kept along with Baba, दादी and Baba then called Dadi कोटि कोटि वंदन to करते Baba. हुए So यही we will thank multi-million fold times. दादी, आप जहाँ भी हों, आप हमारी दादी हैं। And I would say, जैसे आपने हमें wherever you are, Dadi, व्यक्त मिलन के you समय are with us. सब And at the time of Avyakt meeting, ऐसे Dadi filled everyone, भरपूर करते रहें। and even now आपकी continue to fulfill everyone. आपकी मुस्कान, Your teachings, your smile, बातें हमें your sweet words, आती रहे और continue to remember, माने कि आप हमसे दूर नहीं गए हैं। and we also feel that you are not gone far away from us, and you are there always with us. शत शत प्रणाम करते हुए So multi times मैं यही कहूँगा salutations. कि दादी दादी थी, बड़ी बहन थी, Dadi was Dadi, senior sister. Even today she is अनन्य रथ थी, and Baba's a special chariot, जैसा पार्ट और किसी का नहीं। and nobody is having part like she had. दादी को And so, बहुत प्यार से याद करते, with lot of love, खास we remember Dadi, especially on this day, on the day of शत शत प्रणाम। becoming Avyakt. ओम शांति। Multi times salutations. Om Shanti. Thank you so much, Brother Nirwair. Dadi was Dadi in fact. And Dadi in herself was very wonderful. Dadi and Dadi Janki would meet each other, and that meeting used to be very wonderful.
and I once was looking at it, and I would feel का महासमुद्र that she is the magic of words. एक के बाद एक ज्ञान रत्न लुटाती Dadi Janki was speaking God's version, and Dadi Gulzar would remain silent. उधर मौन का महासमुद्र And there was the great ocean of having the conversation of the jewels of knowledge. प्रसन्न हो जाता था And my mind would become very happy having the glimpse of Dadis. तो बाप समान Now amidst us we have योग लगाएं सदा Sister Chakradhari. रहे अटेंशन सबका कैसे We should have constant remembrance of the one Father, and Dadi would give us the mantra in 2 words. ज्वालामुखी योग हो कैसे मिट How there should be volcanic form of meditation. There should be no weaknesses. There should be all powers of God. So Dadi Gulzar in herself was the invaluable special jewel of the yajna. उनकी उपस्थिति का एहसास Even now, मैं करती हैं many souls महारथी have that न केवल feeling of being with Dadi Gulzar. हमारे क्षेत्र दिल्ली है मगर हमारे यज्ञ के सिरताज हैं ये वो रत्न Dadi was the crown of the yajna. बहुत सामीप्य पाया There are many who had come very close to Dadi, who remained very close with Dadi. हैं आप लोगों ने बहुत We now have Sister Chakradhari. She had given many classes, shared many of the experiences. आदरणीय दीदी से निवेदन करेंगे बहुत बाल्यकाल से उन्होंने दादी जी का सानिध्य पाया Since childhood, जीवन चरित्र के अनेक Sister knows very well about Dadi Gulzar. अपने क्या जीवन में थी उनकी यादों के And the sister will share her experience of being with Dadi. Sister, maybe you know how to contact for translation. We need Russian translation. वैसे तो Everything मैं is switch off. समझती हूँ कई बार दादी के विषय में सुना चुकी हूँ लेकिन आज पुनः सुनाने के लिए कहा Many a times I have shared about Dadi's experience. So once again, I am letting you all know, and whatever I have not told you, I would like to tell you. एक वो भी समय था जब ये खिला हुआ गुलशन रूहानी फूलों से महकता जिधर देखो कभी मामा दिखाई देते कभी बाबा दिखाई देते कभी दादियाँ दिखाई देती चारों तरफ फरिश्तों की महफिल लगी हुई दिखाई देती लेकिन धीरे धीरे देखते ही देखते I had taken the sustenance of Baba and Mama, and Dadi was also along with me, and all birds are above eyes. स्थिति को प्राप्त कर Dadi attained her stage of completion, खुशी and very happily इस नश्वर चोले से अलग हट she became detached from this corporeal costume and became a Vyakt angel. जीवन हम सबको भी सचेत करता है And her life इस नाशवान चोले में inspires us to transform ourselves, नहीं रहना and we shouldn't live in this costume for longer period of time. We have to attain completion. से जुदा हो We have to get detached from this costume बनने के लिए in order to become the crown of the new world. And therefore we have to have that intense effort. प्यारे बाबा और मामा की तो मिसाल हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते We cannot compare Baba and Mama's example with anyone, को भी हम किसी दूसरी दादी से मिलान नहीं कर सकते and we cannot compare one Dadi with the other Dadi. अपनी खूबी और अपनी अपनी विशेषता Everybody have their own specialities, दादी जैसी विशेषता and the speciality of Dadi Gulzar, अन्य दादी it isn't there in any other Dadis. या हो भी सकती
It may be or may not be. का वो अमूल्य रथ This one is Baba's invaluable chariot प्यारे शिव बाबा से मिलने का परम सौभाग्य through which I got the special opportunity to meet Bab Dada, पालना से वंचित रहना नहीं मिला। and no souls ब्राह्मण were deprived of Bab Dada's meeting by becoming a Brahmin, भक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाए decorated herself with Baba's jewels of knowledge, का जीवन अनेकों and reached up to here, बना ही रहेगा। and her life will become the inspiration to each one. पास मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में In my spiritual journey, जीवन का शुभारंभ किया when I began the spiritual life, दादी जी के पास ही for the first time, I came to Kamla Nagar उस समय कमला to Dadi, and at that time in Kamla Nagar, जी थे, जगदीश भ्राता जी थे, Dadi was there, brother Jagdish was there, Satyanarayan brother was also there, साहित्य के विभाग के कुछ भाई जो सब कार्य करते थे वो and a brother who would work in literature department was also there, and gradually the और दादी task became में सदा increasing, and Dadi used to give her cooperation in each and every task. बार लौकिक घर से And once कश्मीर गई थी, from my worldly family, सौगात लेकर आई तो सोचा मैं दादी के I was going somewhere, क्योंकि मैं समय प्रति समय and according to the time सेवा केंद्र में जगदीश भ्राता जी in Kamla Nagar Center, मैगजीन निकलती थी उस कार्य अर्थ हमें बुलाया करते थे। brother Jagdish used to call me दादी जी से भी अच्छा ही परिचय, for going through the Trimurti magazine. तो मैं जब वो सौगात लेकर दादी जी के पास गई, And when I took that gift and went to Dadi, में कुछ कार्य अर्थ खड़े थे Dadi was standing तो मैं for some task. उनको अर्पित की I gave my gift to Dadi. करते हुए Dadi accepted the gift, बड़े प्यार से and with a lot of love हाथ डाल करके ऐसे हाल से बालकनी put her arms around me, के बाद उनका पीछे कमरा आता था and behind the balcony there was Dadi's room. Dadi took me until her room और ले जाकर मुझे पूछा and asked me, कि चक्रधरी Chakradhari, मेरे साथ जो बहन रहती थी the sister who used to stay with me, किसी अन्य सेवा केंद्र पर चली गई, she has gone for other service अकेली हो, and I am alone. तो क्या आप मेरे पास रहना चाहोगे? So would you like to stay with me? तो मैंने प्यारे दादी जी के इस बोल को सहर्ष स्वीकार किया, I accepted Dadi's words कहा जी दादी and instantly said, आपके साथ। Yes, Dadi, I will stay with you. मुझे ऐसा चला कि ऐसा सुंदर अवसर उन्हें कब मिलेगा, And I was thinking when I will get this special opportunity once again, बनाना है। when I have to make my life godly life, और भ्राता जी and such a respected Dadi and the brother and all the jewels are here, and definitely I will be having my progress here. ने पूछा कि And therefore, Dadi asked me, when will you come here? And I replied, Dadi, I will come tomorrow. मुझे मालूम था मेरे लौकिक पिता सेवा केंद्र में रहने की मुझे My worldly father would never give me permission to stay at these centers, but I didn't think about anything because I wanted to make my life spiritual, and I will not get this opportunity anymore. दूसरे ही दिन अपना सामान एक And the next day, I prepared my luggage, नगर गर्मी का मौसम, an airbag, लगभग 2:30 बजे का टाइम था, and it was at 2:30 p.m. I reached Kamla Nagar. जी अपने कमरे में विश्राम कर रहे Dadi was taking rest in her room. थे। दरवाज़ा खोला I opened the door. तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, Dadi asked me, looking at me, Did you come? कहा जी दादी मुझे अब क्या करना है? I said, Yes, Dadi. तो दादी ने मुझे कहा कि मेरी खटिया के नीचे Dadi told me, चटाई है, There is a mat underneath the cot. आप बिछा लो यहाँ।
you spread it here भी विश्राम करो and you also take rest. जो करना होगा मैं बता दूँ And after that, whatever you want to do or you have to do, I will let you know. कुर्सियाँ थी और एक मेज था So there were 2 chairs and 1 table and a few furnitures. उस चटाई को निकाला I opened the mat, I spread the mat. मैंने कोई मखमल का गलीचा बिछा दिया हो It was as though I have spread the velvet mat and I am taking rest here. Because I had the aim, I have to make this life, फल है and this is the proper place that Dadi has called me to come here. मैं विश्राम करके उठी I took rest, तो दादी I got up, I sat beside Dadi. दादी ने मुझे कुछ दिनचर्या आदि सुनाई Dadi told me about the timetable. मैं सुनती रही I was listening. परंतु मुझे लौकिक घर में पढ़ाई करने के पश्चात But after having my Laukik study, करने की प्रैक्टिस नहीं थी I had no practice of any physical actions. I don't know about any physical work. तो हमें कुछ करना नहीं मिला So I couldn't do anything. लेकर उसको कैसे गोंदना है So I would only knew as लेकर उस पर बेलन से how much to roll the chapati or to little cook. मैं और दादी जी शुरू से एक ही कमरे में रहे I and Dadi stayed in one room for 12 years. I stayed with Dadi और इकट्ठे ही हम खाना खाते थे and together we used to have our meals. It wasn't that I eat separately and Dadi would eat separately. बड़ा सुखद जीवन It was a very happy and comfort life which I passed with Dadi. कुछ ही दिन हुए थे तो मुझे कहा कि चक्रधारी Only few days passed क्या आपको धरती and Dadi said, की आदत ना हो Chakradhari, you don't have a कि मैं धरती पर सोने की भी आदत है habit of sleeping on the ground. पर सो सकती हूँ आप So Dadi said, I will sleep on the ground. You may sleep on the cot. I said, no Dadi, I will not sleep on the cot. I feel very good when I am sleeping on the floor. खटिया पर एक काम करना होता है And then Dadi said, कहा चाहे वो भंडारे वाली माता है maybe the mother of the Bandara, या जगदीश भ्राता जी के maybe Brother Jagdish clothes अपने or my clothes लगाकर or Dadi's clothes, sprinkling water on that, and very well it was systematically put on the cot. And everybody were told to put on the cloth over that cot. रात को मैं विश्राम करती हूँ And when it was time to rest at the night time, at that time everybody's clothes were pressed very neatly. और उस प्रेस से इतनी बिजली खपाएं और फिर प्रेस करें क्योंकि बड़ा साधारण जीवन उस समय चलता It was a very ordinary and simple life. ठाट बाट नहीं थे There was nothing show off. परिवर्तन होता गया लेकिन The time सिंपल जीवन transformed and that time was a very simple life. आपके किसी बटन या कोई जगह चुभे पिंच करे इसलिए मैं सोई हूँ इस पर तो मैंने कहा नहीं दादी मैं नीचे सो सकती So I said, Dadi, that I will sleep on the floor, no problem. तुम्हें ये And Dadi never told me that you have to do this, you have to do that. मुझे मालूम नहीं था करना And truly I didn't know as what I have to do and what has to be done at the center. कपड़ा लेकर खिड़कियों को डस्टिंग करते या So Dadi used to have the dusting, पोंछते Dadi used to clean the road, Dadi used to have the dusting of the door. I used to look at Dadi and I used to say, Dadi, this work I can also do. So you leave it, you don't do, I will do it myself. So I learned the dusting as how we have to have the dusting of the home. दादी कई बार कमरे में झाड़ू Many a times Dadi used to bring the broom लेती ये झाड़ू ऊपर ऊपर लगाते हैं खटिया के नीचे भी लगाते and Dadi used to see me that I am simply on the gross form having the broom. But Dadi used to tell me as how to broom. So looking at Dadi, I did all the work. सेंटर में टोली जानी थी
In one of the center, मुझे आती we had to send toli. गुलजार दादी जी को आती Nobody knew as how to prepare the toli, क्या डिसाइड किया but all the three what they decided was, हाँ I said, बेलना अच्छी तरह आता है I know to सकती हूँ roll ऐसी बेसन and cook chapati. चीज की गोल गोल बना के Anything I have to cook, I can cook. चपाती तय पर होती थी उसको उल्टाना या उसको ठीक करना इसी So we have to turn the chapati upside down मैं कढ़ाई से on the stove. उल्टाने करने का So I would do that work. जगदीश भ्राता जी ने कहा And brother Jagdish said, तो हम तीनों ने लग करके टोली बनाई I will also help with you. So in this way, we used to prepare toli, बड़ी सजावट 25-30 piece toli we used to prepare, लगाई और सुंदर टोली तैयार and a beautiful toli would be prepared. करने का ये भाव है The meaning of me saying this is, हाथ डालते थे Dadi used to cooperate in each and every work. It wasn't that Dadi couldn't do this kind of a work. ये थे कहीं पर Once Dadi was going somewhere, डॉक्टर के पास कोई दांत चेक कराने जाना था and I had to go to a doctor थे कहा for the tooth specialist. तो आप मेरी स्कूटर पर चलो मैं आपको अपनी स्कूटर पर ले चलूँ And I said, Dadi, I will take you on my scooter because earlier there were no vehicles, वो भी खर्चा होता है there were no three-wheeler vehicles. In bus only we used to travel. स्कूटर पर चलो मैं आपको ले चलता हूँ And Dadi said, you come on my scooter, I will leave you wherever you want to go. So Dadi sat with me, तो रास्ते में चौराहा आया तो वहाँ लाल लाइट हो गई and there was the traffic signal, होने पर there was the red light on. The vehicle stopped, की and when the vehicle was stopped, तरफ की लाइट का अब सवाल है टाइम लगता है तो खड़ा हो गया it would take time, खड़ा हो and the vehicle stopped there. से खड़ी हो गई Dadi also stopped herself, वाइट लाइट हुई and when there was a white light, चला गया और दादी तो खड़ी की and the brother went away, and Dadi was waiting तो हमने कहा दादी there itself. And when Dadi came back, I asked Dadi, गए थे Dadi, you wanted to go to the doctor, but why did you came back? खड़ी हो गई I don't know. I also stood where the brother stood, and that brother went away, and I stopped myself there. बड़ा स्वभाव होता So Dadi was very innocent, शांतित स्वभाव होता was very peaceful. डॉक्टर के पास पहुँच कर देख That brother went to the doctor, and patient wasn't there. आके कहा आप So he came back again and asked Dadi, where were you? थे तो मैं भी देख कर उतर गई So Dadi told all the story, तो मानो इस and the brother didn't turn back and saw Dadi. So Dadi's life was very simple. बस लेनी होती थी किसी मिनिस्टर के पास पहुंचना होता था Even if we wanted to take the bus and reach on time to meet any minister, कहते थे आप बस के आगे खड़े हो जल्दी जल्दी जा कर के ताकि बस खड़ी हो जाए Dadi Gulzar would be told that you have to go and stand in front of the door of the bus so that we can very quickly go and reach. So it was a very happy life which we led. For Dadi, I would say, कुछ नहीं कराया Dadi would do herself and then ऐसा teach us. जीवन से हर पल हर क्षण प्रेम Every moment I took inspirations from Dadi. और टाइम पर विसल होता था वहाँ बिरला में And according to the time, 4 बजे there would be a vigil. तो 4 बजे विसल पर ही कई लोग आना शुरू कर देते At the vigil at 4 a.m., everybody on the vigil, they used to come to the class because when Dadi Gulzar used to come to class, इतनी अच्छी बातें सुनाते थे धारणा की बातें very good things of inculcation would be told, very deep knowledge would be given. After that, Dadi would speak the Murli, हमारी पहली क्लास कहीं मिस and everybody would feel our first class would never be missed. So, would reach the first class. खुलने शुरू हो गए And after that, there were many centers that were opened. है वहाँ भी लोग बैठे होते थे Wherever there would be place, everybody would sit in every place, and the hall would be full. घूम कर आए Dadi would sometimes say,
we will just see if we are having any empty house. We will take a big house because it is a rented home. ले तो दादी ने कहा So Dadi said, लखनऊ में जब मैं थी when I was in Lucknow, बाबा ने लखनऊ में भेजा Baba sent me to Lucknow. There was two Baba sent Dadi Shantamani and Dadi Gulzar, सारा दिन and 5 rupees was given. Whole day they have to be toured, उसको हम किराए पर and wherever the house will be empty, we will take that home. वो मकान So Dadi liked one home, and घूम घूम के रक्षा पर we took that on rent, थी अंधेरा होता and there would be darkness, there was no light, उसे पूछते थे and we used to go down there, and we used to ask them whether someone is staying here or not. And when we came to know about that home, तो उसने कहा क्यों आप क्यों पूछ रहे a watchman was standing there, and he was saying, as why are you asking whether this house is empty or not? So we then replied मेरा ही मकान that we want a home to live in. So that watchman, he on one side used to live, and on the other side the center was opened. नगर में भी In this way, then चलो चल Kamla Nagar, Dadi would say, we will see a new home. शाम के टाइम ऐसे ही So morning and evening, अंधेरा देख we used to go on walk, पूछते कोई मकान and we used to ask anybody as any home is vacant or not. So in this way, in order to increase the service, अभी मेरे Dadi would be very attentive and clever. ही चाहूंगी And at the last, I would tell you, मीटिंग हॉल में यहाँ बैठी हुई once Dadi was sitting in Dadi meeting hall, there were 5 to 6 brothers and sisters विचार कर रहे and were having discussions. गुलजार And suddenly Dadi Gulzar came. दादी जी ने आकर कहा Dadi said, ज्ञान गोष्ठी हो रही है what discussion of knowledge is going on? बड़ी गहन गोष्ठी हो रही है I said, it is very deep. समय And if you have time, you please come and sit here. अच्छा मैं बैठ Dadi said, okay, I'll sit here. ला दी और I brought the chair, कुर्सी पर बैठ and Dadi sat on the chair. सुनाओ आपकी गोष्ठी क्या हो And Dadi said, tell me first, as what discussions were you having? बाबा कहते हैं We said, जो तत्व Dadi, Baba says, ही उपद्रव मचाए all the 5 elements will bring upheavals at the same time, तैयारी करें and what preparations we should have before that. भयानक विनाश से पूर्व Before having dangerous destruction, how we have to save ourselves. ने ये कहा है And amongst one sister said, I have begun to make effort. तो दादी ने कहा So Dadi said, शुरू कर दिया what effort have you begun? You tell me also. ने सुनाया So that sister said, Dadi, I have thought, कुछ दिन पानी होने के बावजूद भी मैं पानी नहीं पीऊंगी for some days I don't drink water, so that we can live without water for some days. कभी शाम भोजन नहीं Someday in the morning and someday in the night, we will not have our meals because we should have the preparation at the time of destruction, at the time when we don't get the meals. ठीक पुरुषार्थ चल रहा है So she asked Dadi, Dadi, is it a right effort? Dadi said, I don't believe this. अगर आप नहीं मानते हैं तो जो आप मानते हैं वो आप बताइए And we all said, Dadi, you tell us, what do you believe in? में ऐसा भी समय आया Then Dadi said, in the जब खाने yagya, पाती नहीं the time came when there was no chapati and no pulses to eat. सोडा डाल के इतने गुड़ को With jaggery and soda, के और बच्चे a very sweet dish was prepared, and with that, अगर ज़्यादा children were given chapati to eat. बच्चों को खिलाई And Baba made each one to eat chapati. So in the divine vision, का पेट भरा Baba called them to the subtle region, and the children were fed with meals. So Baba have never spoken about हमें क्या करना there will be nothing at the time of destruction to eat. ऐसे भयानक समय से बच So Dadi said, हम सब if we want to save ourselves at that dangerous time, हमारी अनासक्त and at that time we should have an unlimited disinterest
attitude. की, घूमने की, देखने If we have the interest in wearing, eating, drinking, seeing, वश नहीं हो, and at that time we सब will not बच्चों be को having बाबा disinterest. करके उनको कुछ ना कुछ जरूर पहुंचाएगा। So Baba, the last time, will give something or the other. और Baba will not make us starve from hunger. होता था तो हम रात को छत पर सोते थे, At night we used to sleep on the roof, और बीच में तो कोई ना कोई कन्या भी आने लग गई, and a few Kumaris would also come. We all four used to sleep, and on the roof brothers would sleep, सितारे आकाश पर होते हैं। and there are stars in the sky. Dad used to tell the story of the stars. दादी, आप इतनी देर जब बाबा का आना शुरू हुआ, आप इतनी देर बैठ जाते हो, आप थक तो जाते होंगे। And when Baba had come, Dadi would, you would become tired, will you not? So Dadi said, Baba will do all the work of mine. I feel myself very light. I remain very fresh. I don't become tired because it is Baba's task. कोई दिव्य साक्षात्कारों So whenever there used to be divine vision, ज़्यादा बातचीत, क्योंकि Dadi used to say I wouldn't speak much, तो मैं भी दादी से कोई ज़्यादा बातें and therefore I too would never speak much to Dadi. साक्षात्कार का अनुभव सुनाया Dadi once was sharing her experience of visions. In the very beginning, छूटता था, when anybody left their body, आत्मा को बुलाया जाता था, the soul would be called स्वीकार कराया जाता, and the Bhog would be fed. तो जो भी आत्मा शरीर छोड़ती थी, The souls who would leave their body, उनकी प्रवेशता होती थी, they would स्वीकार कराते थे। come in the body of mine, मन में आया, and Bhog would be fed to that soul. मन में आया, It was all Dadi's experience, what Dadi is saying. So everybody would come in Dadi's body. बहुत व्यस्त संकल्प आया, So then had the waste thought, and दर्द हुई, there was so much pain in my body. वो मेरा दर्द करता, My each and every vein was paining. I took forgiveness from Baba. I told sorry to Baba, तन को जब चाहिए and I told Baba, whenever you want, Baba, you use my body and I will come in front of you. So such is our Dadi. को अपने जीवन को She benefited every breath of hers. She dedicated everything of hers to Baba. बाबा से मंगल मिलन मनाने का इतना सुंदर अवसर प्रदान And gave us a very beautiful opportunity to have a beautiful meeting with Bab Dada. So multi-million times I have my salutations to Dadi, my heartfelt tribute to Dadi. Om Shanti. आदरणीय दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी के वो 12 साल Thank you, जो Didi. अनमोल साथ थे, दीदी ने बहुत बांधे The होंगे, invaluable तब moment. आपको 5-6 सुनाए। Dadi निस्संदेह and Didi's स्मृतियों के सागर से was जीना very बहुत beautiful. मुश्किल होता है। और अब हमारे बीच में आदरणीय आशा दीदी, उनके पास भी बहुत सारे अनुभव हैं। We now have Sister वो Asha दादी के साथ रहे, because Sister Asha stayed with Dadi in Pandav Bhavan, तो दीदी अपने आप में बेनज़ीर also in Om Shanti Retreat Center. से भरी तद्बीर So Dadi is filled with all experiences, प्रेम की तस्वीर। and Didi was also with Dadi. So we will also listen from Didi Asha. कुछ कहने का मैं गुजारिश करूँगी कि वो आज परम आदरणीय गुलजार दादी जी, जो आज भी हमारे बीच हैं, हम जरूर पुण्यतिथि मना रहे हैं रस्मों रिवाज में, लेकिन सच पूछिए We are celebrating the day of remembrance of Dadi Gulzar. तो आदरणीय दीदी से निवेदन So today there will be the giving and taking of the experiences, के चित्र आपके सामने रखें। and therefore Sister Asha will now speak. ओम शांति। Om Shanti. ये मेरा परम सौभाग्य है
It is my great fortune दादी जी का सानिध्य बहुत छोटी आयु में I was in the company of Dadi उपलब्ध हुआ. and I got this opportunity to be in the company of Dadi. मैं पढ़ती थी, Those days I was still studying. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी I was a university student और मधुबन आना जाना होता था. and there was the coming and going to Madhuban. परिवार बहुत पुराना 1958 से ज्ञान में चल रहा था. The family was in this path of knowledge since 1958. दादियों का विशेष ध्यान And therefore Dadi had special attention towards my family. मधुबन आती थी. And when I used to come to Madhuban, गुलजार दादी को कहा, Senior Didi told Dadi Gulzar, Dadi used to go on for a walk. Dadi was told, ask this one, what is the aim of her life? तो दादी उंगली पकड़ करके Dadi hold my finger. नकी लेक की सैर पर ले चलते थे Dadi took me on walk near the Naki Lake. Dadi used to talk to me, धोबी घाट हुआ करता था. and there is a washing department, बैठ जाते थे and would sit there, दादी और मैं. only Dadi and myself. बातचीत होती थी, क्या बातचीत होती थी वो मुझे आज याद नहीं है. I don't remember what conversation we had. दादी जी अपने साथ जो अपना संग देते थे But Dadi used to give her company, काम किया. and that company would work. पढ़ने के पश्चात जब मैं ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को समर्पण After my study got over, तो सर्वप्रथम I began this spiritual journey. आना हुआ. I came to Delhi Pandav Bhavan. पांडव भवन पहला वो भवन था. Delhi Pandav Bhavan was a bhavan. के ने सारे भाई बहनों ने All brothers and sisters together had सिर्फ पौने 4 purchased that bhavan. उस समय हमें बहुत बड़ा भाग्य मिला जो आदरणीय दादी ऑलराउंडर दादी निर्मल शांता I was very fortunate. तीनों की ही हमें पालना में I got the sustenance of Dadi Prakashmani, Dadi Gulzar, Dadi Janki. उन समय कमला नगर होता था. At that time it was Kamla Nagar. जोन इंचार्ज बनाकर दिल्ली पांडव भवन में रखा गया था. I was a captain Kamla Nagar. मुझे वो दिन याद आता है जब मैं पहले And those days, I do remember when I put my first step, देखी वो पांडव भवन को सजा रहे. I looked at the humility of Dadi Gulzar. She was decorating Pandav Bhavan. और दादी ने फिर से वैसे बचपन जैसे उंगली पकड़कर सारा पांडव As she did in my childhood, Dadi hold my finger वही होते थे. and told the Pandav Bhavan. There was brother Jai Prakash. घर की मालिक Dadi told, bring the key. The master of this home has come. और इतना बड़ा शब्द उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं At that time, I couldn't understand what Dadi is telling me. करती हूँ. But with respect, when I remember Dadi, Dadi had great humility. मालिक स्वयं लेकिन She was herself a master. उत्साह देने के लिए But in order to give zeal and enthusiasm, in order to move others forward, Dadi gave me सौभाग्य the self-respect. कि दादी जी ने मुझे अपने साथ अपने कमरे में लगभग 16 I am supremely fortunate. Dadi kept along with her for 16-17 years. को ऑब्जर्व करने का And after that, मुझे बहुत मौका मिलता. I got many opportunities to observe Dadi.
Dadi was so detached, इतनी देही अभिमानी, so soul conscious, इतनी फ्रेंडली, so friendly, इतनी एम्पैथेटिक so empathetic, और इतनी साक्षी दृष्टा. and a detached observer. बहुत सारी बातें, एक एक शब्द जो मैंने बोला है Many things. इसके ऊपर कई कहानियाँ. There are many stories in each and every word which I have said. वो हस्ती थी, Dadi Gulzar was such a personality. महिमा जी भर कर के भाई बहन करते थे. Her praise was sung by every brothers and sisters. स्वीकार नहीं But Dadi never used to accept any praise. थी. तो दादी तुरंत कहते थे, Whenever anything would happen, सेंटेंस ओ Dadi would say, होता था, Dadi's opening sentence was, की महिमा तो शिव बाबा की. Shiv Baba should be praised. All the praise तो दिल से लगा is of Shiv Baba's. स्वीकार नहीं. Dadi never used to accept her own praise. आज वो हम सबके दिलों पर राज्य, And therefore she is ruling each one's heart. महिमा हम दिल से उनकी करते हैं. We sing a praise तीसरी with the जो दादी ने bottom of our heart. मेरे को सुनाई थी, Dadi once had said, दादी ने कहा, बाबा ने मुझे वरदान दिया था. Baba had given me the blessing. दादी आप सब जानते हैं, संदेश बाबा का लाते थे और दादी Dadi used to bring Baba's trance message. मुझे Dadi herself was a trance messenger. I do remember अच्छे हैं. गुलजार दादी ने बहुत History Hall of Madhuban. बाबा ने कहा गो सून और कम सून. Dadi was sitting, Baba was sitting, and was told, Go soon, come soon to Dadi. 3 minutes record was played. Dadi went, Dadi offered Bhog, and Dadi came back instantly after the song was over. Dadi was so clean and clear intellect, because of which कोई कठिन नहीं. it was not difficult for Dadi to be detached. बतलाया कि एक बार बाबा पत्र लिख रहे थे. Once Baba was writing a letter, गुलजार दादी भी वहाँ पर ही. and Dadi Gulzar was there, sitting beside Baba. ने कहा Baba said, कि बच्ची एक दिन ऐसा आएगा Child, one day will come जो तुम्हारे पत्रों को भी जैसे साकार के पत्रों को सब इंतजार करते हैं पढ़ने के लिए, just as everybody will wait or anticipate for my letter. Similarly, people will also wait and anticipate for your letter to read. चलेगा ये होगा. And nobody knew at that time there will be the avyakta part which will go on. कैसे दादी जी के द्वारा लाए हुए संदेश दादी जब लिख करके भेजते थे, And when Dadi used to write the trance message, not only in one place, अनेकों स्थान but that trance message would go to many places. बाबा का दिया हुआ And this was the blessing given by Baba. And Dadi used it practically. थे. दादी उस समय दादी को कौन आ रहा है कौन जा रहा है And when Dadi आप उनके सामने would come and sit here, 10 मिनट and for 10 minutes Dadi would stand, and Dadi don't know as who is coming or who is going. Dadi wouldn't come to know. And Dadi would write the Almighty's letter. ऐसा वरदान जो दादी So Dadi got this blessing. ने दिया. And the third blessing that Dadi got was, बाबा ने कहा, Baba said, दादी गुलजार ने डायरेक्टली सुनाया, this is all Dadi Gulzar spoke directly. तुम्हारे नैनों के द्वारा Through your eyes, there will be lot of service. कहा बचपन में दिया हुआ वरदान It was all the blessing that Dadi received in her childhood. There will be service through your eyes. And today we all know मुलाकात हम सबकी कैसे होती थी. how we have the meeting with Bab Dada through Dadi's eyes. तीसरा, एक बार दादी
यज्ञ की बात है हैदराबाद सिंध की, उसमें दादी It is about Hyderabad, Sindh. किसी को समझा रहे, Dadi was giving class to someone. वहां से निकली, Mama just passed. मम्मा ने सुना, Mama also heard. पूछा Mama asked, मीठा आवाज किसका है? whose this sweet voice is? तो बोला स्वीट तो था, इतना मीठा आवाज। Dadi Gulzar's voice was very sweet. ने बताया कि ये गुलजार बोल रही है। So the other sister said, Dadi Gulzar is speaking. ने कहा वरदान दिया, Mama gave the blessing. बहुत सेवा करेगी। Her voice will do a lot of service. So we listen to Baba's version through Dadi's lips. इतना संतुलन था There was so much balance in जो गुलजार था, Dadi's words. जो बात जितनी कहती है How much Dadi want to say, Dadi would say. There was nothing extra, बहुत संत nothing less. उनकी होती थी, Dadi would have very balance in her words. बहुत रेयर And this किसी में होती है। art is very rare in कहना है anybody. जितना कहना है उतना ही How much ever Dadi wanted to say, विशेषता थी। Dadi would only speak that much. And it was the Dadi's speciality. आदि से रहे, आदि से From the very beginning, जब बाबा ने उनको भेजा Dadi was in service. तो वो जो रॉयल्टी के संस्कार And when Baba sent her to service, Dadi had a very royal sanskar. बाबा ने जब भेजा, And when Baba sent, फर्स्ट क्लास के टिकट नहीं मिलते, there were no first class tickets. क्लास There was a third class tickets. सब प्रकार के लोग थे। बाबा And there used to be all kind of people in the train. दादी कहते थे, हमने बाबा को कहा, बाबा I said, Baba, लखनऊ देखा या नहीं? Baba, I haven't seen Lucknow where it is. अरे बच्चे So Baba said, मुल्तान ढूंढ लिया, the blind have होकर के कहते हैं, searched लखनऊ कहाँ है? many places, but you being Trinetri, you don't know where Lucknow is. ट्रेन में बैठे Sitting in the train, इतने शुद्ध पवित्र वातावरण में रहने वाले, the one who is staying in the pure atmosphere, he is sitting in the third class. कर रहा है कोई, And there are many different types of people. Some are smoking, दादियों को कैसे लगा? some are how and some are how. And Dadi was sitting in the third class. और उनको बोला कि हमें फर्स्ट क्लास में भेजो। And the station master was told, you have to make me sit in the first class. Dadi smiled. Station master also smiled. थर्ड क्लास की है, The station master saw the ticket. It was about the third class. And Dadi said, I want to sit in the first class. उस पवित्रता There was her divinity, her purity, स्टेशन her innocence, मोल लिया और उसने and touched the टिकट खरीद करके station master, and she sat in the first class. ऐसे जब लखनऊ पहुंचे, And when she reached Lucknow, एरिया कौन सा है? she asked which is the first class area तो सबसे and want to open the center there. वो भी बताया गया, एमएलए क्वार्टर, वो It was MLA quarter. पूरी हिस्ट्री है समय की। It is the history of the MLA quarter. दादी जी Time is short now. पूरा जैसे रॉयल्टी से With a royalty, with a divinity, with a purity, सारे का और एमएलए क्वार्टर में सेंटर खोला। then Dadi opened a center in the MLA quarter. मिनिस्टर को कहा, The chief minister was told, I want to open the center in the MLA quarter where only MLAs will be there, but I want to open the center there. सेंटर खोला, उसके So in the MLA quarter, स्थानों पर the center was opened, इस प्रकार से दादी जी का and in this way, प्योरिटी there was the Dadi's royalty, purity. और लॉफुल, Dadi was the loveful and lawful. ऐसा नहीं है केवल लवफुल थी, It isn't that Dadi was only loveful. मर्यादा की बात है, Wherever it was about the वहाँ दादी से code of conduct, मैं छोटी सी एक बात बता, Dadi was serious.
कि वो कितनी लॉफुल थी और कितनी मर्यादा I will tell you how much Dadi was loveful and lawful. मधुबन आ रही थी। Once the group was coming to Madhuban, लोग थे and there were many people ट्रेन on the road. समोसे बना के लेके आया, Somebody brought रहे थे, some spicy item and it was distributed. बहन थी कन्या, There was one sister, साथ में एक भाई बैठे थे, there was one brother along with her. चाहिए था, That sister wanted only one समोसा उठाकर that spicy item and she put that in the plate of the brother. जब पार्टी मधुबन से लौटी, And when the group returned from Madhuban, दादी को ये बता दिया, somebody told this to Dadi कन्या ने ऐसा किया, that this Kumari did this to this brother. बुलाया, Dadi called her. तो तुमने ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा किया, Dadi asked her, did you do this? ऐसा तो किया था मैंने, So the sister said, yes, I did this. I wanted only one. I don't wanted the other one. So I put the other one to that brother's plate. So Dadi said, you shouldn't do this. This is a very little thing. मर्यादा क्या कहती है? But what does the code of conduct say? What does the discipline say? That they would give teachings. अटेंशन खिंचाते थे, आपका संग बहुत, That they would draw attention towards company. अगर Your company should be very elevated and good. तो If your company is not okay or good, अटेंशन खिंचाते, then Dadi used to draw the attention नहीं करो, that don't have that company that which is bad. स्वयं का अपना संग बहुत अच्छा रखा, And Dadi herself kept very good company. हमारे टीचर के रूप से भी थे, Dadi was our teacher के रूप से हम बहनों को बैठ करके जहाँ क्लासेस कराने होते and Dadi used to give classes for we sisters. Dadi would have our gathering first आपको क्या बोलना है, आप and Dadi would teach us what you have to speak, how you have to speak. दादी जी Should teach us everything systematically. कहें उतना ही कम है। एक बार मैं It is very less how much ever we speak about Dadi. दादी पीछे थे ओआरसी में, मैंने कहा दादी मैं जा रही हूँ, अब सारा घर आपको संभालना है, I said, Dadi, I'm going out. You have to look after ORC. एकदम पीछे बहनें बताती हैं, सवेरे से लेकर Later on, the sisters told me दादी पूरा Dadi would have the ऐसे नहीं, तुम ये करना, timetable for throughout the day. उतर के Dadi took the leadership and perform all the tasks. पावर बहुत अच्छी थी, Dadi's catching power was very good. आ जाते हैं जब मैं याद करती हूँ, I remember all of this. I have tears in my eyes. आ गई थी, बहुत डिफिकल्ट, It was a very difficult condition once. बाबा का मैसेज मिले, And I was thinking I should get Baba's message. टूर पर थे, दिल्ली में नहीं, Dadi was on tour. Dadi was not in Delhi. Dadi was abroad में जहाँ रेत के टीले हैं, in Israel लोकेशन भी नहीं where there is only desert, where we couldn't have conversation with Dadi. हो रहा कि आशा And I was feeling that I have to speak to Dadi. And Dadi also would get the signal that Asha wants to speak to me. गाड़ी रुकाई, फोन मिला है, The vehicle was stopped. और सच में I had a phone call. जो मुझे चाहिए था, And truly, दादी बाबा से whatever I wanted, I told Dadi, I want to get the message from Baba. And within 30 minutes, Dadi gave me the reply. कैच करना, जो बाबा कहता है, Baba says about catching power. भक्तों की आवाज़ सुनाई नहीं Baba says, देती, do you not listen to devotees' वो मेरी आवाज़ words? हमें, Dadi heard my voice. Even we should hear. वो क्या चीज़ थी दादी में, Dadi had such a beautiful catching power. क्या चीज़ थी, वो थी शुद्धता, कल्याणकारी, Dadi had purity, सकारात्मकता, the feeling of benefiting. क्लीन, The mind and heart was clean and pure. प्यार, बेहद
डिटैच, She had love, निराकारी अवस्था, detachment, निरंकारी incorporeal stage, ऐसी हैं egoless stage. बुद्धि को These are the things which keeps our intellect clean and clear. वो हमें तब सुन And only then the devotee's voice will reach us. दादी जी को जितनी बार With these words, उतना कम है। the more I thank Dadi, the more it is less. Om Shanti. लग रहा था आप यहाँ हैं ही नहीं, कहीं गहरे डूब गए। I used to feel that we are not यादों के here. समुंदर से ये मोती जो अभी आशा दीदी ने आपके सामने रखे, Sister Asha kept और all ये the जो भाटा है वो आज के expensive दिन treasures हर in front दिन of us. बहुत तेजी के साथ उठ रहा है। दादी जी, तुम में थी पहचान परख, चुन चुन फूलों को लाया, Dadi, you बाबा selected के इस many, भवन को you brought to तुमने Baba's खूब home, सजाया। you decorated them सेवाओं all. की हर तरंग में तुमने रास In रचाया every था। waves of service, पूरब से पश्चिम you तक created the दादी, play. तुमने अलग North किया। and south, अभी you अनुभवों have के माध्यम से elevated आप सुन रहे थे। everyone. मगर आज भी You मौन have मुखर हो, enlightened, अव्यक्त empowered रूप में everyone. खड़ी हुई, वक्त Now Dadi जहाँ is भी है तो standing in रास्ता this subtle world, अनुभूति से भरी हुई, filled with all experiences. हमारे बीच आदरणीय स्वदेश दीदी मौजूद है। Amidst us, we have Sister Sudesh. वो भी आध्यात्म का सफर जब शुरू की तो And when she began the spiritual journey, दिल्ली से जर्मनी तक उन्होंने ध्वज लहराया। her journey was from Delhi to Germany. आत्माओं को उन्होंने जगाया। She has awakened many souls. हमारी He is amidst us. हम उनसे She is the joint chief कि वो अपने कुछ मोती रखें and will keep few pearls in front of us. बाबा को। And after that, we will offer Bhog to sweet Baba and sweet Dadi. ओम शांति, ओम शांति। दादी जी, हृदय मोहिनी जी, Dadi ji, गुलजार दादी जी, Hriday Mohini ji, Dadi Gulzar. ये तीन दादी जी के जैसे बचपन के नाम शोभा, The childhood name is Shobha. बाबा ने नाम दिया गुलजार, Brahma Baba gave the name Gulzar. अव्यक्त वतन से नाम आया हृदय मोहिनी। And the name from Avyakt world came as Dadi Gulzar. का जीवन Dadi Gulzar's life दिव्य, सरल, was divine, अति स्नेही, simple, मेरे को extremely loving. मिलने का सौभाग्य I got the opportunity to meet Dadi in 1957. फिर ब्रिजमोहन भाई के पेरेंट्स करोल बाग दिल्ली में रहते And at that time, Brother Brijmohan's parents were in Karol Bagh, Delhi. And there was a center. थे। रजौरी गार्डन में And from there, स्थान Dadi's main place, Razori Garden, where Baba Mama used to come. Dadi used to come there to have Bhog to Baba. को भोग लगता था। So in the afternoon time, Baba used to be offered Bhog. हमारा जन्म समय का जो आज ब्राह्मण जन्म हुआ हमारा, And it was the time when I had दर्शन में मैं Brahmin birth. कॉलेज से थोड़ा पहले निकल करके यही होता था कि मैं पहुंचूं बाबा So from college, I used to reach the center. तो बाबा के आने के बाद After Baba's coming, किया, इसलिए वो मैग्नेटिक एनर्जी, वो आकर्षण there was that magnetic energy, the attraction, को sitting far away. बच्चे नहीं भी पहचानते उनको भी Even those who don't understand Baba, even they would have the
realization and the feeling for Baba. दादी जी की दृष्टि में In Dadi's drishti, जो एक पवित्रता, there was purity, divinity, love. वो विशेष लगता था। It would be very special. देह में रहते देह से न्यारी While being in the body, being detached from the body, अवस्था क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन being the bodiless stage, it was a kind of experience. It is not only about to see or about to think of. तो 3 गीत बजते थे उस समय So at that time, 3 songs would be played. कि अब ये देश हुआ बेगाना, Oh bird, now we have to fly high. We have to now leave the world. There used to be gramophone महसूस होता था and we used to feel साकार इन दादी जी के शरीर से कोई कुछ चीज़ निकल रही है, something is coming out from Dadi's body, पर उठती है, बिल्कुल ऐसे महसूस होता था। and I would feel some smoke is emerging out from Dadi. वो भी हमको नहीं था, At that time, I don't had experience of angelic stage or a bodiless stage. And when I got drishti from Dadi, यहाँ नहीं बैठे हैं, it was as though I am not sitting here. वातावरण की महसूसता होती थी। I would have the realization sitting in a very pure atmosphere, भी इस देह से न्यारे होते and I would feel जा रहे that I am detached from this body and flying high. का लगता है फौरन Dadi would go into trance. ट्रांस में नहीं जाते थे, There was shake in the body. देर तक भोग लगता था, I could see all this. उनको झटका लगा वो ऊपर चले जाते थे, Dadi would go up above, तो हम नीचे ही रह जाते। but I would also have shake in the body, but I would remain down below. जो वो 15 मिनट क्योंकि And that 15 minutes, धरती को the third song would be played. आजा आजा प्रेम द्वारे आना ही होगा, The sky is calling out for the earth. प्रेम का द्वार खुला है, You now come. ये स्नेह The door of love is open में ऐसा फैल गया है, and it is spread in the atmosphere. आ रहे हैं, The हम वो अनुभूति यहाँ कर रहे हैं। Dadi soul is meeting Baba in the trance, and we are meeting Baba here down. मूवी की तरह It was like a movie. होती है वो तो ठीक, There is subtle world. साकार वतन में There is movie in the subtle world. भाव भाव से And here too, समय मुस्कुराहट at the time of offering Bhog to Baba, अच्छी आती Dadi would have a sweet smile on the face. है कि साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी के After Baba became Avyakt, आप हम सब ने सुने we all have heard many experiences of Dadi. के प्रवेश होने से पहले भी उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, We know about the character, personality, simplicity, भोलापन, cleanliness, नेचर simple nature, स्वयं ही प्रभावित innocence होती थी। would attract everyone. लोग गए थे दिल्ली में ही दादी के साथ रहते थे, I would stay in Delhi, उस समय in Kamla Nagar with Dadi. या उससे पहले या पीछे गए नेपाल नैनीताल में एग्जीबिशन करने के लिए। I went to Nainital to have exhibition. स्थान तो उस समय बहुत समय इकोनॉमी का था, There was the time of economy. We couldn't get big place. साला हो We would take dharamshala, pilgrimage house, guest house, rest house. So I do remember Dadi had so much of simplicity. एग्जीबिशन करते थे, Throughout the day we would have exhibition कितने लोग आए, and there was a hall. So morning till night we would have the exhibition and then we would sleep on the ground. We were very young. कहने में आता है कुमारियाँ We were Kumaris. उस समय भी महान थी, But Dadi was great at that time जैसे and in a very natural way, जाते थे, as everybody would sleep on the ground, तकिया मिला ही नहीं मिला, सो गए, we would get the
pillow or not, we would sleep. So Dadi would also sleep in the same manner. As is the time, so the situation. और Naturally, नेचुरल रहना, तपस्या नेचुरल रही। Dadi had that character. अर्ली डेज में In the early days, जब तक we could see Dadi कमला नगर में जब रहते थे, when we used to stay in Kamla Nagar. याद आ रहा था So today in the morning, I would remember those days. बिल्कुल सिंपल That day was also so loving, so simple, so ordinary. भंडारे में ब्रह्मा भोजन बनता है, कितना शाही भोजन होता है, And nowadays in the kitchen, कितनी प्रकार। we prepare a Brahma Bhojan. उस समय बाबा There are variety of Brahma Bhojan nowadays. हम भी केला ही At that time, भोजन भी केला we used to offer Bhog to Baba. We used to offer ऑप्शन banana to Baba. And we also would eat banana. की वैसी As is the time, so the situation. ऐसा नहीं महसूस हुआ कि रोज रोज वही खाना We never thought about every day we are getting the same meals. स्वाभाविक No, संस्कार आत्मा में दिव्यता there was a natural sanskar of renunciation. Renunciation would be not felt as a renunciation. की महान आत्मा के साथ हैं So I got the opportunity to stay with that great personality. सेवा के उस समय सप्ताह रखा गया, I would get chance to do service. सप्ताह ज्ञान सप्ताह। We would celebrate every week. तो दादी जी का We would celebrate every week taking one or the other virtue. धैर्यता से, गंभीरता से, प्रेम से, Being matured, से with patience, कि आपके अंदर with a depthness. It was the natural gift of all virtues in Dadi. बाबा के आने के बाद का तो रंग ही निराला है। The color is completely different after Baba started coming in Dadi. मैं आई लंदन में 3 times Baba came in Dadi. की बात सुनाती I am speaking about Germany. 76 में In 76, लंदन आई, अकेली आई थी, Dadi came alone. कोई साधन नहीं था कि कोई There was no facility. ब्रह्मणी हो या कोई भाई There was no custom of having any sister along with Dadi. Dadi traveled alone. नहीं जानती थी। Dadi didn't know English. कोई ने कुछ पूछा, We would ask Dadi, Dadi, how did you handle? Did anybody ask you anything? Dadi would only say, I don't know English. मुस्कुराहट से And with a Dadi's smile, तो आते थे, यानी नेचुरली वो आकर्षण इतना था natural attraction was there in Dadi. की बात नहीं। जब People would come to meet Dadi. अभी तो परिचय देते, परंतु दादी जी के परिचय देने से भी पहले Now we give introduction of anybody, एनर्जी but at that time there was no custom of giving introduction of anybody. जैसे बाबा But Dadi was a natural magnet and everybody would become attractive towards Dadi. Dadi's drishti would give everyone love, current and vibration. की में In Dadi's drishti, there was a love, current, power लाइट हाउस की तरह in the form of lighthouse. ऑपरेशंस फैल जाएं, Their vibration would spread everywhere. अनुभव होती And other souls would also experience. Those who are हुई है। फ्रेग्रेंस ignorant souls, they also would experience fragrance of Dadi. नाम पहचान ना भी हो, Even one doesn't recognize the flower. Only by having the fragrance of that flower, they would be attracted. So Dadi was spiritual fragrance. ऐसे लगता था जैसे कि Even in the airport, तो साधारण ही है, परंतु आकर्षण इतना होता था there would be so much of attraction in Dadi जब तक सामान निकले, ऐसे until we would take out the luggages. यानी कुछ खींच रहे हैं उनको। We would all look at Dadi. We would feel we are having the glimpse of deity. We are having the glimpse of में ये मेरा एक Shakti. अनुभव रहा कि दादी जी At that time, तो I had the experience
समय तो लंदन का मकान भी छोटा था बहुत, The London place was also very small. तो हमारा रूम सिंगल बेडरूम था। I had a single bedroom. को वो ऑफर किया, I offered Dadi that room, and we all स्टेशन रूम जहाँ बाबा का slept in a meditation room where there is Baba's translite picture. It was summer season. It was in the month of June. तो दादी जी क्या कह बताना चाहती हूँ कि दादी जी अकेली नहीं आई, अव्यक्त बाप दादा को साथ लेके आई। Dadi didn't come alone. She तो मैं brought Avyak Bab बाबा Dada के रूम along में with her. सोई, And when I was क्लासरूम ही था परंतु बाबा का ट्रांसलाइट था वहाँ। तो sleeping आधी रात in अबाउट the 1 o'clock Baba's मुझे room, ऐसे लगा जैसे कि at 1 a.m., एक लाइट की I बॉडी felt घूम 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 रही है, यानी body of कोई light आए है कमरे में। was मैं जागी एकदम, traveling here and there. मैंने समझा my 4 room. बज गए हैं, I got up परंतु अभी तो myself 1 ही and बजा looked था। everywhere. It was तो only मैं 1 a.m. at बाबा that के time. सामने वो ऐसा लगा, वो जो लाइट है, लाइट I की बॉडी felt वो बाबा की body of ट्रांसलाइट में light पहुंची है। that reached तो बाबा ने, Baba's मैं बैठ translite गई, picture. बाबा ने कहा बच्ची, I got up and said, बाबा साकार का, बाबा ने साकार तन लिया, Baba said, प्रकृति का Baba आधार has लिया। taken the ब्रह्मा corporeal बाबा body. का अपनी प्रकृति के साथ हिसाब किताब पूरा हुआ, Brahma परंतु Baba's मेरा यानी ऐसे बिल्कुल शिव बाबा karmic के शब्द, accounts are over. मेरा अकाउंट अभी बच्चों से कम चुकतू नहीं हुआ है। And Baba बहुत said, my बच्चे account हैं is not जिनको completed with the बाबा children. से अभी मिलना है, There are many children और who have to गुलजार meet दादी जी Baba. से उसी प्रकार का मिलन जैसे बाबा के साथ चलते फिरते, ये नहीं महसूस होता Just था, as कभी we had the क्वेश्चन नहीं meeting with उठता the था Baba, we never कि used to have निराकार से है या question साकार है, whether we are having बाबा a meeting बाबा with भाई है। तो incorporeal or ऐसे ही गुलजार corporeal. दादी से भी Similarly, जब भी उनसे उनके सामने आओ, whenever we would come in ये front of Gulzar Dadi, क्वेश्चन नहीं उठता है, we never had the स्वाभाविक question. रीति से Very बाबा बाबा ही naturally, है, we would प्रकृति say का Baba is आधार Baba. लेकर के अपना अनुभव करा रहे हैं। And Baba taking अब the भी medium बाबा of matter उनके is अव्यक्त making us सिग्नल्स experience. रूप से Even हमको now ऐसा we ही are मिलन having होता the है, बाबा अव्यक्त अपना signals. अनुभव करा रहे हैं। And we ओम feel शांति। that Baba is making ओम us शांति। experience. ओम शांति। Om Shanti. अभी हमारे सामने हमारा वीडियो डिपार्टमेंट एक बहुत सुंदर दादी के प्रति अपने भाव सुमन Now लेकर आ our रहा video है। department 2 मिनट का is गीत having a है very और sweet वीडियो video द्वारा आप सबके सामने प्रस्तुत and, किया जाएगा। the video उसके will बाद be मधुर वाणी ग्रुप presented in front of तैयार all of बैठा you. है। And आगे then ये we have माइक the में Mother शशि Vani दीदी group के हवाले कर रही हूँ। song. अव्यक्त बाबा का साकार रूप हो, दादी गुलजार बखूबी निभा रही हो अपना ये किरदार। है भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो, है भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे
भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। आप में हमको बाबा का होता है दीदार, आप में हमको बाबा का होता है दीदार। रूहानी मुस्कान आपकी देती हमको प्यार, देती हमको प्यार। सबके मन को मोहने वाली, सबके मन को मोहने वाली, बाबा की राज दुलारी हो, बाबा की राज दुलारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिकर हो बादशाह। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिकर हो बादशाह। निर्मल हो निरहंकारी हो, मान की नहीं चाह, मान की नहीं चाह। सबके संग में रहते फिर भी, सबके संग में रहती फिर भी, सबसे न्यारी प्यारी हो, सबसे न्यारी प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। मधुर वाणी ग्रुप स्वयं रचयिता और स्वयं गायक आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आँखों से ओझल होकर भी दादी तुम दिल के पास हो, संगम युग की तुम शोभा होकर करती गुलशन गुलजार हो। सतीश भाई एंड ग्रुप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है अपने भावों की सुमन अंजलि गीत के माध्यम से। ओम शांति। अभी अभी हमने इतना मधुर संगीत सुना और अव्यक्त बाप दादा के प्रत्यक्ष में अनुभव किया। We had a very beautiful song, हमारे and आदरणीय भ्राता हरीश मोयल जी ने हम सबको we have पहुंचा a दिया। very beautiful singer, Harish Moyal. दादी के
and he has sung a very beautiful song. It is as though we are with a Bab Dada शिक्षाएं हमारे सामने and we are having Bab Dada's teachings भी आज हमारे and principles in front of us. इतने सहयोग के कारण हम सभी करतल ध्वनि से उनको भी He has given so much of cooperation. देते हैं। We will also thank him a great deal. दादियों से इतना प्यार रहा है, He has so much love for Dadi, चाहे दादी maybe Badi Dadi, चाहे गुलजार Janki Dadi, Gulzar Dadi. अपने मन के उद्गार प्रकट करते ही रहते हैं। He expresses his views, and we were all experiencing दानों से भर that Baba will fill our aprons with the jewels of blessings. बहुत सुंदर संगीत और गीत आवाज मन की भावनाएं लेकर के The Madhurvani group has now reached here. आंखों से ओझल होकर भी The theme of the song is दिल के पास हो, दिल से Dadi, you may not be in front of our eyes, but you are very close to our heart. हमारे दिल में हो, हम दिल से दादी और बाबा Like Bab Dada, you are also in our heart. में हैं, हम सब Like Baba, we cannot remove Dadi from our heart. करने जा रहा है। So, Madhurvani group song. बाबा है जहाँ दादी है वहाँ, Where Baba is, ये दिल को there पूरा विश्वास Dadi है। is. The heart has this तू हम सबकी faith. धरती और आकाश है। Dadi, you are the sky and the earth. You are my whole world. इस अवसर पर On this special opportunity, we will remember Dadi from the bottom of our heart. दादी जी याद है। We remember Baba, we remember Dadi, we remember Dadi, and we remember Baba. बाबा का रथ
मन की भावनाओं, दादी से रिक्वेस्ट, बाबा से रिक्वेस्ट, दादी आप एक बार फिर आ जाएं, दादी हमारे सामने आ जाएं, बाप दादा को साथ लेकर हमारे सामने आ जाएं। कितना न प्यार है बच्चों का बाबा से, दादियों से, बाप We have so दादा much से। love for हम Baba, अवश्य ही रिक्वेस्ट Dadi. को सुनेंगे ही। और अभी हम सभी प्यारे बाबा, अच्छा ले आओ। अभी हमारे बीच में दिल्ली पालम विहार से Now Delhi Palan Vihar, Sister Urmila has brought a portrait of Dadi. करतल ध्वनि से हम सभी अपनी खुशी प्रकट करेंगे। दादी देखते जाइए प्यार से। ऐसा लगता है कि दादी तो क्या बाबा ही हमारे सामने आ गए हैं। We feel it is not Dadi but Baba is with us, and we will now offer Bhog to Baba. मोहिनी दीदी जी हम सब की तरफ से Our sister Mohini, बहुत स्नेह भरी यादें लेकर on behalf of all of बाबा us, के पास, दादी जी के will पास go to भोग Baba, लेके जाएंगे Dadi, और हम सबकी to स्नेह offer भरी Bhog. यादें देंगे। और आज का जो Our love and भोग remembrance will be given to Baba and Dadi. भोग है और फ्रूट आदि मिलाकर के टोटल 101 प्रकार का भोग हम There are प्यारे बाबा 101 type of दादी जी Bhog, को स्वीकार करेंगे। and we will क्योंकि बाबा के offer to बच्चों को Baba सदैव and Dadi. खिलाते रहे हैं, तो आज हमारा भी मन है कि हम भी बाबा के सामने Baba all the time feeds his children, but we too have the feeling of offering Bhog to Baba. आप सबकी बहुत बहुत स्नेह भरी यादों के साथ So, Sister Mohini, स्वीकार कराएं। with a lot of love, भोग स्वीकार will offer Bhog to Baba. बैठे रहेंगे, पीछे वाले सब बैठ जाएं। अभी प्यारे बाबा का संदेश सुनेंगे। कोई भी बाहर नहीं जाएं, माताएं सब बैठ जाएं। सभी भाई या बहनें अभी बैठेंगे, प्यारे बाबा का संदेश सुनेंगे। कोई भी बाहर नहीं जाएं, सब बैठ जाएं।
सभी की स्नेह भरी याद और प्यार लेते हुए बाबा के पास जब आज के दिन का भोग स्वीकार कराने के निमित्त बाबा ने वतन में बुलाया। I took the love and remembrance all of you, brothers and sisters, and reached the subtle world to offer Bhog. The splendor of the subtle world was very unique. Baba was welcoming everyone. However, along with Baba, मैंने देखा कि हमारी दादी जी भी जैसे हम सबका our Dadi was also there. It was as if Dadi was waiting for us and welcoming us. और बाबा मुस्कुराते हुए Baba and Dadi smiled सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। and gave very loveful drishti, and we children too लवलीन होते हुए was lovely, बाबा से दादी से न केवल प्रेम भरी पर बहुत not only love शक्तिशाली दृष्टि but very लेते हुए powerful drishti के लिए we were taking from Baba and Dadi, and there was the eye contact for quite some time. मेरे को देखा दृष्टि दी Baba looked at me, gave me drishti, नेत्रों से ही मैंने बाबा को सबका याद प्यार दिया। and through drishti I gave Baba everyone's love and remembrance. आज वतन में I said, बाबा सभी बच्चों को आह्वान करके बुला रहे हैं। Baba, everybody are in the love of you. And Baba said, I saw everybody wants to reach the subtle world to have meeting with Baba. तो ऐसे कुछ क्षणों के बाद After some time, जैसे हम सभी जितने भी थे I saw all of us who were there, थे ना, जैसे यहाँ बैठे हैं as we are sitting here in the gathering, कई दृश्य there will be not sitting in the gathering. फरिश्ते कहो या परियां कहो तो आप देखेंगे ना हमेशा पंख हिलते हैं। There were angels, their wings were flying. बहुत सुंदर रूप था। There was very beautiful form of each one there. They were looking as angels. ऐसे सभी जैसे बहुत उमंग उत्साह में झूम रहे थे। They were all swinging with a zeal and enthusiasm. आसपास जैसे बहुत सुंदर रास भी चल रही थी। They were having a very beautiful dance with Baba. फिर मैंने कहा देखो बाबा आज तो हम दादी के लिए भोग And I then added, Baba, today I have brought Bhog for Dadi and you. उस समय पर दादी गुलजार को कहा कि तुमको अपनी सखियां भी बुलानी है। Baba told Dadi Gulzar, you have to call your friends. So you call them. Dadi said, Baba, you call them. इशारा किया। अब कहाँ से पहुँचे? Baba signaled, दादी की सभी सखियां वहाँ पर पहुँच and all Baba Dadi's friends reached the subtle world. को पहले भोग स्वीकार कराया। Baba first offered Bhog to Dadi Gulzar. तो मैंने कहा बाबा आपके लिए भी, तो मैंने बाबा को I said, Baba, I will also feed you Bhog. ऐसा दृश्य रहा। For quite some time this was the scene. दादी ने सभी का Baba then said, केवल बाबा ने उनका जो पार्ट था ड्रामा में वो चला, Dadi not only played her part according to the drama, अपने पुरुषार्थ से अपनी स्थिति से but with her own effort, with her own stage, जैसे कि with her own form, वो जैसे प्रत्यक्ष किया अपनी स्थिति से she revealed कि एक विशेषताएं और गुण तो बहुत थे। there was one speciality and virtue, and that was simplicity.
और क्योंकि She was चित्त very सरल था, simple तो हमेशा साफ रहता था and was very clear, और उनके लिए सब कुछ सहज था। and everything for her was easy. ये तो मुश्किल है, And Dadi never said, "This is very difficult. How it will happen? It is impossible." नहीं निकले। Dadi never uttered these words सरल because of simplicity. और बाबा ने She was very simple. स्वाभाविक, नेचुरल, सहज योगी थी। She was a natural yogi, वर्तमान समय पर and according to the time, से on behalf of Baba, बाबा एक डायरेक्शन कहो या इशारा दे रहे हैं तो उस पर दादी के Baba gave a direction, signal करना है। to all the children. बाबा ने कहा कि चाहे हर हफ्ते चाहे हर महीने Baba said every week, सभी एक every स्थिति को month लेकर have to take up one stage, not only have to practice, but have to become the embodiment of it. सारे And through your form, उसी तरह का प्रोग्राम करो। you have to conduct program बाबा के in the whole world. एक बार बाबा ने कहा योग का प्रोग्राम होना चाहिए। Brahma Baba also once said there should be the program of yoga. लेकिन अभी जैसे दादी के सामने And now, भी आता था whoever would come in front of Dadi, साइलेंस का अनुभव, Dadi would make them experience silence, दादी की दिव्यता peace. का अनुभव, वो सब अनुभव होता था। Dadi's divinity would all be experienced. And at the present time, one should make everyone have this experience. And how there will be this experience? लेकिन अब है Speaking, listening is all done, बनो, but have to make and become. तो वो सिर्फ शब्दों से नहीं होगा। One has to become तो आप and make others the same. बना के Should have one stage, भी 2 घंटे 3 घंटे कोई भी ऐसा प्रोग्राम 2 hours or 3 hours should have the program. तो बाबा ने कहा न केवल उसकी पब्लिसिटी होती है, And should have that बनता है program in the whole world. तरीके से सबको इस तरह का अनुभव हुआ। In a real way, you should make everyone experience. Dadi said, भी जाऊंगी, I will also go. कहती है मैं भी चलूंगी। तो हमने कहा दादी हमें तो बहुत खुशी होगी। And I said, Dadi, you will also come to such a program. I will be very happy if you come. So this was the chit chat with Baba and Dadi. तो सबको सुनाएंगे और कुछ तो प्लानिंग होगी। Dadi is giving the thought, something will happen. मेरे साथ हो And I am very happy that Dadi is with us. दादी बाबा सब जितने भी पूर्वज आत्माएं थे सभी ने कहा कि हम Baba, Dadi, and ancestor souls, everybody said, फिर उसके बाद we are all happy to hear this news. We will all do this. I said, Baba, everybody are asking one question to me. Where is Dadi? Baba doesn't tell us anything. Dadi, you tell me, where are you? Dadi said, why are you asking me this question? मेरे से कहा तुमको भी ये प्रश्न है क्या? मैंने कहा नहीं। Dadi asked me, are you having this question? साथ हो I am with Baba. Dadi said, I am with Baba. ऐसे संकल्प क्यों आने चाहिए बच्चों? Why should children have the thought where Dadi is? अंत तक सभी पूर्वज Dadi is with Baba. आप सभी बच्चे सब All the ancestor souls are with Baba. All Baba's helpers are in the one gathering बाबा के in the Avyakta form, मददगार are completely Baba's helpers. ऐसे ही बात So Baba said, never ask this question, where Dadi is now, where the other Dadi is. बाबा के साथ Never ask this question. बाबा के साथ Dadis are all with Baba, पूरी मददगार हैं, and Baba and Dadi are together. सभी इकट्ठे रहेंगे और मदद And in the final moment, all the Dadis are with Baba. दादी फिर भी ध्यान पर देते हैं बच्चों के कि एक मत श्रीमत Baba draws attention of the children. जरूरी नहीं कि One आप ही direction. वाला है। अगर सभी एक मत It is not only about the bead of the rosary of fate. कहा कि
If there is unity, बड़ी माला there will be a big garland of the whole world. तो बाबा और दादी ने जैसे ही वरदानी हाथ ऐसे करके बाबा ने Baba and Dadi placed the hand of blessing in the avyakta form. वरदानी दृष्टि थी Baba gave और साथ साथ drishti of blessings, बच्चे words of blessings. सदा Children एक रस और एक remain constant, एक रस से remain united. तो ऐसा बाबा सभी बच्चों को वरदान देते हैं Baba gave blessings वरदानी हाथ से and Dadi too बहुत बहुत वरदान देते हुए was giving blessing to each one, दृष्टि देते हुए and again in silence याद प्याला gave drishti, और मैं gave love and remembrance, and I then came down. Om Shanti. सभी ने प्यारे बाबा का संदेश सुना और बहुत ही अव्यक्त स्थिति में होकर के धीरे धीरे Everybody heard Baba's message. Everyone will silently go and have your Brahma Bhojan. सभी शाम के कार्यक्रम के लिए समय पर ही यहाँ पर Everybody will assemble here in the evening for the evening program. अपना ये किरदार भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। है भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली मीठी मीठी दादी हमारी हो। मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। तुम सबकी प्राण प्यारी हो। में हमको बाबा का होता है दीदार। आप में हमको बाबा का होता है दीदार। रूहानी मुस्कान आपकी देती हमको प्यार, देती हमको प्यार। सबके मन को मोहने वाली, सबके मन को मोहने वाली
बाबा की राज दुलारी हो, बाबा की राज दुलारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिकर हो बादशाह। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिकर हो बादशाह। निर्मल हो निरहंकारी हो, मान की नहीं चाह, मान की नहीं चाह। सबके संग में रहते फिर भी, सबके संग में रहती फिर भी, सबसे न्यारी प्यारी हो, सबसे न्यारी प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी